Okay, positional parameters are argument first one, right? सो हियर पोजिशनल पैरामीटर्स में फंक्शंस में कैसे रहता है वर्क होता है. सो द नंबर ऑफ आर्गुमेंट इन द फंक्शन कॉल मस्ट बी यूज एज द सेम नंबर ऑफ फॉर्मल पैरामीटर्स. जो भी arguments है functions में, the number of arguments in the function that will be that functions call must be used as the same number of formal parameters. So in the B we can say the order or position of arguments in the function call must be same in the function definition. So जो भी functions call में use करेंगे number of argument will be the same. Okay. जैसे हमने नंबर ऑफ फॉर्मल पैरामीटर्स एबीसी लिया तो हम कॉलिंग में एक्स वाई जेड या इधर हम कॉल कर सकते हैं. दैट इज नोन एज पोजिशनल पैरामीटर. सो लेट अस टेक द वन एग्जांपल एज अ पोजिशनल पैरामीटर. ओके, एग्जांपल फॉर पोजिशनल पैरामीटर. Positional parameters are argument. Yes, so take one function first. Define one function. Suppose I are defining one function. The name of function is what? Addition. Okay. uh, so we are defining the formal parameters. Suppose A, B, C. Okay, so here we can say here A, B, C are we can known as a formal parameter. C are formal parameter. So जब कॉलिंग करेंगे तो भी सेम पैरामीटर चाहिए कॉल करने के लिए. मतलब तीन पैरामीटर, तीन आर्गुमेंट चाहिए, उसको हम बोलेंगे पोजिशनल पैरामीटर. सो फंक्शन कॉल कैसे कैसे कर सकते हैं? पोजिशनल से. सो एक्स वाई जेड हम कॉल करेंगे एज आर्गुमेंट. दैट इज नोन एज पोजिशनल पैरामीटर. सो हम लिख रहे हैं कि कुछ कैलकुलेशन पर्पस आर डूइंग हियर A, B, C. Okay. Now the main program. Okay, so in the new main program, so we are passing this argument. Suppose x, y, z is equal to 10, 20, 30. Suppose. Okay. ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So here we can call this. Okay, d is equal to addition of x, y, z. Okay, x comma y comma z. So such type is known as positional parameters. इसको हम बोलेंगे पोजिशनल पैरामीटर्स. सो हियर ये आर्गुमेंट्स है. हियर एक्स एंड वाई कॉमा जेड दैट इज नोन एज actual arguments we can say are the actual arguments. Okay, or you can say these are the arguments. Okay, so we are passing from here. So we can print now what we want to print. D we want to print. Okay, so sum is equal to dot format of D. Okay, dot format of D. So save this file first. I am saving on desktop. Okay, positional example 1. हाँ, क्या हुआ? प्रिंट एफ हो गया. ओ हो. Okay, print. Now open cmd command prompt.
Okay, go to our desktop location. Okay, Python POX example1.py. Okay, sum is equal to none. No values is existing. Okay. Mm, if you call this one, so it's again if you use the another variable without returning. Yes. Return yes here. Okay. Yes is not defined. और डी में हम स्टोर करेंगे पोजिशनल पैरामीटर। सॉरी, यहाँ पे यस हटा देंगे हम। ओहो हो, यहाँ पे डी लिखा तो मैंने यहाँ पे यस लिखा था। ओके। ओके, उल्टा हो गया वो। सो यहाँ पे यस लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे यस लिख दीजिए। ओके, नाउ दिस इज ओके। सम इज इक्वल टू 60। Okay, so d is returning and you can storing this another variable. So this is about positional parameters. I say we can take here the another example for the positional parameter also. Example number 2 we are going to see. So we want to print here student information. So I'm taking as a function name std display display student std info. Okay, display student info. So roll number, name and marks. Okay, roll number, names and marks. तो इसको हम क्या बोलेंगे? These are the positional parameters. Okay, positional parameter mechanism. So positional parameter mechanism. So here you can print this data. Asterisk 30. So 30 times it will be print. Print student details. Print, copy paste this one. Okay. Now can print the student details.
student roll number, student roll number dot format of, you know, student name and student marks. Name, you are taking the name variable name and marks. Okay. Okay, now come to the main program. Main program. In the main program, what we need to do? Call this function, take variables, okay, and call this function. So we have not declared the variable, na? So we need to declare the variable no. So take the value from keyboard, okay, input int. So enter here, enter student number, okay, like this way. Enter the student number. Take one variable, yes, only another variable you need to take, because we have taken here name and mark. So yes name you can take now. Okay, so name in the string data type, name is in the string data type. Okay, so no problem. So here you can write, enter your name, enter student name, student name. Next, take another variable, yes marks, that may be in the float. So do the typecasting. Okay, input of, here you can write, enter your marks. Okay, enter student marks, you can say. Okay, enter student marks now. So now call this function after entering this one. Okay, that is known as positional parameter mechanism. It's a positional parameter mechanism. So number of arguments in the function call must be used the same number of formal parameters. That's it. That we must be the same number of formal parameters. That is known as positional parameter. So order and position of argument in the function call must be same as a function definition. सो फंक्शन कॉल सेम होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि यस हो, तो यहाँ पे भी वही उसकी आर्गुमेंट जाएगा। ओके, और यहाँ पे यस मार्क्स लिखा और यहाँ पे यस नेम लिखा, यहाँ पे यस मार्क। आप बोलेंगे कि मैं ऐसा लिखूंगा तो नहीं चलेगा। ओके, इधर नहीं चलेगा ऐसे। ये देखिए, यस नेम को मार्क जा रहा, मतलब वैल्यू जा रही है इसको, यस एनो को की वैल्यू जा रही नेम वेरिएबल में, और यस मार्क्स की वैल्यू जा रही है मार्क्स में। ओके, दैट इज ओके, बट दिस इज नॉट ओके। इसलिए वो सेम होना चाहिए ऑर्डर। तो यस कॉमा यस नेम। ओके, ये प्रॉपर ऑर्डर ऐसे जाना चाहिए, उसको बोलेंगे पोजिशनल पैरामीटर्स। ओके, पोजिशनल पैरामीटर्स। नंबर ऑफ फॉर्मल पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट मस्ट बी सेम, और ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, एंड ऑर्डर मस्ट बी सेम। ओके, फंक्शन डेफिनेशन ऑर्डर, ऑर्डर मतलब ही समझो पोजीशन, इसीलिए उसको बोलते हैं पोजिशनल पैरामीटर्स। पोजीशन मस्ट बी सेम, प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए, फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड, थर्ड टू थर्ड। जो फॉर्मल पैरामीटर हम दे रहे हैं वो, और फंक्शन में जो डिफाइन किया फॉर्मल पैरामीटर वो, और जो आर्गुमेंट पास कर रहे हो, दैट द पोजीशन मस्ट बी द सेम। पोजीशन मीन दैट इज नोन एज ऑर्डर, इसलिए उसको कहते हैं पोजिशनल पैरामीटर मैकेनिज्म। सो हमने यहाँ पे ऑर्डर, ऑर्डर सिर्फ
ये देखो यहाँ पे यस और नो है, तो यहाँ पे ये वैल्यू कौन किसको दे रहे हैं हम? नंबर को, मतलब नंबर है देखो। हाँ, सो ये सेम होना चाहिए ऑर्डर, इधर का उधर इधर का उधर नहीं चाहिए। ठीक है, ये इस और ये इस साइड हम लिखेंगे नहीं चलेगा, ऑर्डर मस्ट बी सेम, दैट इज नोन एज पोजिशनल पैरामीटर मैकेनिज्म। इसी को बोलते ऑर्डर पोजिशनल, ऑर्डर मीन्स पोजिशनल, दैट्स इट। ओके, number of argument in the function call must be used as the same number of parameters in formal parameter. Formal parameter means the variable which you use inside the function definition. Okay, इसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, एंड आर्गुमेंट जो हम पास करें दैट मे बी द सेम इन द फंक्शन डेफिनेशन। सो ऑर्डर मीन्स पोजीशन, सो ऑर्डर सेम होना चाहिए। ओके, सो जैसे हमने यस यनो लिया, सो दैट इंडिकेट द वैल्यू ऑफ रोल नंबर, सो हियर वी आर टेकिंग द वेरिएबल यनो, we are taking the variable yes name to indicate the student name, so we have taken here variable name. Okay, that's it. Now call this function. Now print this data. Okay. Enter the student roll number 101, enter the student name, mark something. Okay, student details is as follows. Student details, you can see, check here, roll number is printed, नेम के जगह नेम ही आया प्रॉपर, और मार्क्स के जगह मार्क्स आ गए. So if you change this one, now value is going to be change. ठीक है, मैंने पोजीशन चेंज करता हूँ. Okay, so now I have changed all this position. Now see here what is going to be happen, the values is going to be changed. Okay, now see here, enter the student number बोला तो नंबर है तो रोल नंबर डालूंगा मैं, नाम बोला तो मैंने लिखा गुणवन. ओके, मार्क्स बोला तो मैंने लिखा समथिंग मार्क्स. नाउ सी हियर व्हाट इज प्रिंटिंग हियर. ओके, स्टूडेंट रोल नंबर इज प्रिंटिंग गुणवंत. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Student name is printing marks, student marks is printing 101. समझ में आ रहा है ये? Because I have changed the position, because I have changed this position, so that is not possible. Okay, that is not recommended in the positional parameters. So in the positional parameters we must have to provide the position, means order must be required. So इधर यहाँ पे यनो है तो मुझे यनो ही लिखना पड़ेगा, जो भी है. रोल नंबर के लिए जो भी वेरिएबल लिया वही लिखना पड़ेगा, नेम के लिए जो है वो बराबर है, मार्क्स के लिए जो है इधर मैंने लिया था यस मार्क्स. ओके, नाउ आई वांट टू इम्प्लीमेंट वंस अगेन दिस प्रोग्राम, आई वांट टू इम्प्लीमेंट वंस अगेन, और मुझे इम्प्लीमेंट करना है प्रोग्राम को. सेव दिस वन वंस अगेन, आई एम गोइंग टू enter the student most call position to line number 12. What is the problem here? Line number 12. Yes, no. Yes, marks. Two times I have written the marks. Yes, name we must have to write here. Okay. Now, okay, enter the student number, name, and marks. Something marks I am writing. Then this displaying result. Now I want to add something to implement this program once again. So I want to print continuously. Okay, don't want to enter, don't want to exit after the entering the first student details. I want to take the student details, many more student details I want to print. So continuously print होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लूप लेंगे. ओके, मीन्स वाइल कंडीशन लगाएंगे, दैट कम्स अंडर द वाइल इज ट्रू. अभी मैं एक स्टूडेंट का डेटा ले रहा हूँ और वो प्रिंट होने के बाद
प्रोग्राम मेरा एग्जिट हो रहा है, so I don't want to exit that program. Okay, once again I want to print. So take everything this while. Okay, so now print one character to exit that statement. Okay, we need to exit that statement. So here what I'm going to try it, if take one variable that is known as a ch variable, I'm taking here int, any character you can say. Okay, so input I'm writing here to stop, enter 1, and to continue, enter other than 1. Okay, float means, हाँ वो भी कर सकते हैं, no problem. So here if can take any one or one print करे तो हाँ वन प्रिंट करे तो स्टॉप, अगर उसके अलावा कुछ भी प्रिंट करेंगे तो कंटिन्यू. So we are giving the prompting message to the user. So you can give the prompting message to the user as a true. Sometimes क्या होता है कि user t small छोड़ देता है, कैपिटल नहीं लिखता है t, है ना. यूजर ये यूजर को नहीं समझता ना, 1 2 3 4 समझ जाएगा सिंगल डिजिट. तो यू कैन से टी फॉर ट्रू, यू कैन से एनीथिंग, नो प्रॉब्लम. ठीक है, आप यूजर को, यूजर कैसा है, यूजर एजुकेटेड है, यूजर के ऊपर डिपेंड है एप्लीकेशंस में आप यूज कर रहे तो. ओके, so जब I am writing here if ch is equal to 1, then you can print the one message, thanks for using app. Okay, thanks for using app, our application you can say. You can give this message. Then we have to write here the exit function. Okay, so exit function is required. So when we write here exit function, it is work or not, let us check here. Otherwise you have to import one other module. Okay, 101 student name, then marks, something marks. Okay, so now are you observing here? So after entering the student detail, to stop enter 1, and to continue enter uh, enter than 1. Okay, ठीक है, मैं गलत लिखा हूँ. So now I want to enter 1. Okay, so yes, it is existed, exit हो गया ये. Thanks for using the app. Okay, thanks for using enter press 1. Okay, to stop press 1, we can say simply guide the user to stop press 1 and continue uh, any to continue enter press any, हाँ press any. ओके, प्रेस अदर देन 1. ओके, क्योंकि हमने कंडीशन सिर्फ 1 की दी है. हाँ, फाइंड आउट. सो ओके, I you can press anything, A B C D, no problem. Okay, you can press anything. Okay, oh yes, okay. So integer. So for that purpose, you need to exception to handling there. We have the topic in exception handling. Okay, so see here why I am entering this my name here instead of a student number. So it's giving an exception. Okay, value error is the name of exception, guys. Okay, value error, it's the name of exception, invalid literal. Okay, so we need to handle the exception. So we have the exception handling. Don't worry. So enter the student name. Okay, and enter the marks, something I am writing here, and now we can see here. So I am entering 9. Okay, any digit because we are taking the int. Okay, no problem, but again it is continuing. Okay, so student and roll number is like this way, and Kaushal and marks is something, again that is entering. ओके, वो ज़्यादा मार्क्स है, वो उल्टे हो गए होंगे. ठीक है, तो ऐसे मैंने प्रेस कर दिए हो. सो नाउ आई एम एंटरिंग हियर ए. Okay, so what is the problem here? Because we are taken as a integer. Okay, so that may be the here value error.
because of it is a invalid literal, so it is an integer literal, we must have to specify the integer literal only. So we have given here the exception. So in that case we can write there exception to the exception handling, enter only integer value. Okay, so that may be the user understandable message. So what is an exception handling? To convert the technical error message into the user friendly message, that is known as exception handling. That's it. Okay, so here one other than one, okay, आप ये print कर सकते हो, no problem. So you can take here instead of int, don't take anything. Okay, str you can take, but here this condition proper valid होंगी क्या जब हम str लेंगे तो. So let us check this one. Okay, because हाँ हाँ, तो yes is going to become a str ना, one is going to become a str. Let us check first. So student name, okay, something, and marks is something. Okay, कुछ भी हम लिख रहे हैं ऐसे. Now yeah, one I am pressing. One is taking as a one, or it is acting as a other. Okay, it is acting as a other. One is not reading, guys. Okay, one is not reading. One is not reading. Okay, one is not reading. So okay, so इसलिए मैंने invalid डाला, then end हो गया. So one is not reading. So now what we need to do? This. Okay, then once again execute this one. Okay. Okay, so 101 something marks is there. Oh, student name ABC. Okay, now I want to press 1. Okay, is it okay now? 1 if we press, then this application is stop. Okay, so I hope you are understood this one. This is very important as a web developer, as a development point of view. Okay, so this is about the positional parameter. Next one is what?